शाहजी एक आते दूसरे हैं, मुसलमान शाहजी हैं। से हाँ, उनसे पूछ लेते हैं इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉ मैनिंग हिम। शाहजी, आप जो कुरान की जो किस्से हैं जिसके अंदर सुपर नेचुरल इवेंट्स है, डू यू एक्सेप्ट देम एज द वे दे आर रिटन, और डू यू एक्सेप्ट देम एज जस्ट मिथ्स यूज्ड टू कन्वे अ पॉइंट? समझ आ गई बात। लेट्स गो बैक टू द फैक्ट के भाई जो क्लेम है कि यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी के पेट में 15 दिन जिंदा रहे, लिविंग इनसाइड द belly of a fish for 20 days या जितने भी डेज है, do you accept that as a actual event, real event that actually happened, और आप उसको as a allegory लेते हो कि एक स्टोरी बनाई हुई है जिसके जरिए एक मैसेज दिया हुआ है उस कुरान में, बट दैट एक्चुअली द पर्सन नेवर एक्चुअली लिव्ड इनसाइड द फिश फॉर दैट मेनी डेज, that's just a तमसील, that's just a like a allegory, तो आप उसको रियल लेते हो कि actually happened as a event, और ये डिस्कनेक्ट हो गए जी। कोर मैं उनको बस इस पे लेके आ रहा हूँ, फोकस टू द फैक्ट कि भाई जो सुपर नेचुरल क्लेम्स है उसको आप रियल लेते हो, क्योंकि आप मजहब के सुपर नेचुरल क्लेम्स को आप हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, और मेरा सिर्फ क्वेश्चन है कि सुपर नेचुरल क्लेम के और हिस्टोरिकल इवेंट को आप किस तरह कंपेयर करके उसको सेम एपिस्टेमोलॉजिकल वैल्यूज कैसे दे सकते हो कि भाई ठीक है। शाह जी आगे दोबारा से, तुम दैट इवेंट एक्चुअली हैपेंड के मच्छी के पेट में इन यूनुस अलैहिस्सलाम 20 दिन तक जिंदा रहे थे, डू यू टेक दैट एज अ एक्चुअल इवेंट? यू नॉट, लोग इसको समझते हैं सर्टेन वर्जन ऑफ इस्लाम इसको ये समझती है वो सही, लेट्स आई एम ओनली फोकस्ड ऑन, डू यू टेक इट पर्सनली एज अ इवेंट दैट एक्चुअली हैपेंड physically, not metaphorically or not as an example? Can you tell me? I नहीं, promise. I'm not asking about the laws. I'm asking, do you take that story as an actual story? या आप पता नहीं क्यों tangent पे चले, मैं आपसे specific question पूछ रहा हूँ। You तो मैं as आपको Shaji, स्पेसिफिक no, आंसर no, दे no. रहा हूँ Do अगर you आप take that story to actually have happened in real life? Did that person actually live inside the fish for 20 days? ये है मेरा question. उसके बाद क्या हुआ, उससे laws क्या आए, उसका principle क्या था? None of that is relevant to my question. My question is, do you well take you asked me breaks the laws of nature? हो सकता है पॉसिबल या नहीं? इज इट ट्रू दैट दिस हैपेंड, और इफ इट्स नॉट ट्रू दैट दिस हैपेंड? मेरा फोकस सिर्फ इस चीज पे है, द ट्रूथ ऑफ दैट स्टोरी, दैट इट एक्चुअली हैपेंड और नॉट, दैट इज माय कंसर्न, बिकॉज एज अ मुस्लिम on ये जो स्टोरीज हैं, आपका क्वेश्चन ये था, ये जो स्टोरीज हैं
जिस तरह फिश के अंदर प्रॉफिट कितनी देर रहे, कितनी देर नहीं रहे, इसको मैं ट्रूथ मानता हूँ या नहीं मानता। ठीक है, तो बात ये है कि मैंने आपको बताया कि जब मैं ये बुक पढ़ने की कोशिश करता हूँ या मैं कुरान को पढ़ता हूँ, तो मैं असूले दीन और फरूहे दीन उसके अंदर से निकलता हूँ, जिस पर्पस के लिए वो वो तो बुक आई मैंने है। आपसे ये पूछा था ठीक कि है, आप उसी असूल दीन। तरीके से नहीं पूरी नहीं देखिए, पूरी बात खत्म नहीं नहीं करने नहीं दें। नहीं नहीं पूरी देखिए, आपने क्वेश्चन मेरा पढ़ा। What sort of यार yeah, डेसी ने यार इसको really म्यूट करना एक this मिनट के guy लिए is यार। frustrating me. Like या he's acting stupid with प्लीज for no reason. I don't know या why he's यार acting मैं stupid. स्टूपिड सबको नहीं हूँ, नजर आ मेरे ख्याल से आप में अकल I नहीं don't है, know why नियो he's मैं क्या acting so कहूँ। यार ओके weird. मैं बहुत हो गया। आपसे आपसे यार मैंने नियो, बोला नियो पता है क्या, but आई एम this is unfair. आई एम अ क्वालिफाइड No, yeah, एकेडमिक, मेरा that's fine. प्रोफाइल That's fine. वेरीफाई I होता है। don't care ठीक आपका about है क्या your बैकग्राउंड है profile. जरा बताएं। Can you answer one straight question with a straight answer? आई That's हैव my. आंसर्ड अ No, you वेरी have. स्ट्रेट Okay, क्वेश्चन, व्हाई आर यू गेटिंग Shaji, एंग्री? Shaji, आपकी एंगर बता रही है कि यार यू डिड नॉट डेसी एक्सपेक्ट नियो दैट आंसर। ये no, देखें, दिस थिंग इज देखें यार नियो, ड्राइविंग मैं मी आउट राइट शाजी मैं चले मैं आपको बता आपको रहा हूँ आप स्ट्रेट आंसर दे। एक सेकंड शाजी वेट करें। आई मीन रुस्तम शाह आप वेट करें। आप इसमें फाइट करने या उनको पर्सनली कुछ ना कहें। मुझे पता है आप बोलना चाहेंगे उसको पर्सनली। मैं आपकी पर्सनालिटी पे कोई वो नहीं कर रहा अटैक। आप एकेडमिक है। आई डोंट दैट्स नन ऑफ माय कंसर्न कि आपका बैकग्राउंड क्या है। माय कंसर्न इज सिंपली द स्पेसिफिक क्वेश्चन आई एम आस्किंग। उसका आप आंसर तो दे दें। मैं आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ बिकॉज आई वांट टू set a baseline first. Do you believe it as यार मैं an आपको actual उसी event का or do जवाब you दे रहा हूँ यार, मैं उसी accept it as का a, जवाब दे रहा हूँ a, आपको, an उसी का ही। देखें, allegory? आप काम डाउन हो जाए, नियो नियो भाई, राइट, आई मुझे रिस्पेक्ट यू। I ठीक understand. है, Thank you आप for काम डाउन हो जाए, मैं नहीं नहीं आपको जवाब देता नहीं हूँ। नहीं नहीं ठीक है। ठीक मैं है, काम डाउन हो जाऊंगा। अच्छा I भाई love ना कहूँ, क्या कहूँ, मिस्टर नहीं नियो नहीं नहीं देसी नियो, मैं कह रहा भाई हूँ ना कहूँ। आप सही कह रहे हो। काम डाउन में हो जाऊंगा। डोंट वरी अबाउट माय काम डाउन। लेट्स फोकस ऑन माय क्वेश्चन। आपसे मैंने इसीलिए पूछा था कैन यू रिपीट माय क्वेश्चन। माय क्वेश्चन वाज अ yes and no question in the sense do you actually take it as a real event that actually happened or do you take it as a story as a myth? ये मेरा क्वेश्चन था। उसके उस क्वेश्चन को आंसर करें कि आप उसको मिथ लेते हैं या एक्चुअल इवेंट लेते हैं। दैट इज माय क्वेश्चन। हो गई आपकी बात? जी जी, हो गई, बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन था do you take that story as actually a person lived inside the fish or not? तो ये मेरा क्वेश्चन है। Can you answer that question? तो मेरा जवाब इसके अंदर ये है, कुरान इज अ बुक ऑफ लॉज फॉर ऑल मुस्लिम्स। तो उसके अंदर जो स्टोरीज हैं उनके अंदर वेरिएशंस और उसके समझने में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन असूले दीन और फरूहे दीन के लिए हम उस बुक को पढ़ते हैं, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दैट बुक। Okay, great. That's the purpose of that book. Let me ask the question again. Do you believe that person actually fish के अंदर 20 दिन के लिए रहा था या नहीं? That's my question. Can you answer that तो भाई question? मैं तो आपको जवाब दे सकता हूँ कि ये इस फैकल्टी का जवाब ही नहीं है। यार शाजी आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं कि नहीं? मैं तो शाजी आपके क्वेश्चन का जवाब भी दे रहा हूँ। मैं तो आपको इसी के बार बार सेब वाली बात बता रहा हूँ कि फिजिक्स की अक्सर बुक्स के अंदर सेब दिखाया होता है, नीचे न्यूटन बैठा होता है, इस पे कोई नहीं डिस्कस करता कि वो सेब गिरा था उसके सर पे या नहीं गिरा था। ठीक है, इसी तरीके से उसका पर्पस देखते हैं क्या है, उसने क्या लॉज मेजर किए, क्या दिए। इसी तरीके से कुरान केम डाउन, कुरान इज अ बुक ऑफ लॉज, बुक ऑफ साइंस। उसके अंदर असूल दीन है, फरूह दीन है, दैट इज द पर्पस ऑफ दैट। तो हम उन्हीं पर्पसेस को देखते हैं, हम उन स्टोरीज को। हाँ, उसके अंदर अगर आपको असूल के साथ मसला है तो आप मुझे बताएं। स्टोरी के ऊपर तो मैं दो सुन्नी मुसलमान या दो शिया मुसलमान को लेके आऊंगा, वो कुरान की किसी भी स्टोरी के अंदर से डिफरेंशिएटिंग व्यूज दे देंगे। ठीक ठीक वो बहुत सारी सही चीज है। मेरा क्वेश्चन आप मैं लास्ट टाइम दोबारा से रिपीट करता हूँ। डू यू शाजी believe a person actually lived inside a fish for 20 days or not? ये मेरा क्वेश्चन है। Can you answer this question? I've answered this question to the best possible way, Shaji, and did you मैंने hear my आंसर question? कर दिया, मेरे पास It's और a yes, कुछ नहीं it's a है। yes and no question. Do you believe he lived inside a fish for 20 days? Yes or no? I'm That's saying Can I असूल के लिए rephrase? वो Can I बुक है या rephrase this फरूह की question बात for him? करें।
to understand him better, can I rephrase Yeah, this if you want to question? rephrase, because I don't know, मेरी question में बहुत confusion थी क्या? Go ahead, Yeah, yeah. rephrase the question if you So, want. what's your name, sir? ये Shahjahan. अपनी Shaji, ऐश Shaji, Shaji. आपका कोई Shahjahan ji, या what he's ये asking, दूसरी बात ये है कि अगर what आपने he's कोई बात actually माइंड asking की हो is, ना, आई अपोलोजाइज टू यू, Shaji, ठीक one है? second. नहीं नहीं, Let him. sir, Let listen to me. maybe मेरे question ask करने में बहुत confusion है, because मेरा simple सा question था. Do you, Shaji, believe a person lived inside a fish for 20 days and आई एम survived? नहीं सेइंग नहीं, let me I ask you. इज don't care अबाउट द about the book. I said, सुडोजीन Let do me एंड ask you you. ब्रूकिन believe it? Let चिकन me आई ask you. डोंट Go ahead, Shaji, Shaji, Kung Fu Panda. Go Shaji, ahead. listen. What he's asking is that he's not asking whether this story is true or not, whether it happened or not, whether there is any consent between among the different communities or not. What he's asking you is that individually आप किस इसे ट्रू समझते हैं या नहीं समझते हैं? आप अपना अपना मंतव्य यार अपना मैं यू इतना नो ही बता रहा हूँ कि जब मैं कुरान को उठाता हूँ तो मैं उससे असूल और उससे फरू निकालता हूँ, ठीक है? हाँ जिस तरह मैं ये फिजिक्स की बुक निकाल रुकें रुकें जिस तरह मैं फिजिक्स की बुक जब खोलता हूँ तो उसके अंदर सेब की तस्वीर न्यूटन के सर पे गिरते हुए नजर आती है, लेकिन मैं उस पे नहीं डिबेट करता. दैट कैन बी ट्रू आप एंड उसको दैट रियलिटी कैन नहीं बी समझते ना, फॉल्स, देयर कैन बी वेरिएशंस इन दैट. इन आपको इफ रियलिटी नहीं समझते ना, आप उसको आप नहीं समझते ना कि एडिसन के सर पे सेब गिरा था, एक सेकंड, न्यूटन के सर पे सेब गिरा था और उसकी आप वजह से ग्रेविटी न्यूटन का. के सर पे सेब गिरने को और अ पर्सन लिविंग इनसाइड अ फिश फॉर 20 डेज को सेम एपिस्टेमोलॉजिकल लेवल पे देखते हैं, दोनों स्टोरीज को सेम लेवल पे देखते हैं. He wants to know about your, how do you perceive about this story, whether it happened according to you personally. आपका इसमें क्या, what is your opinion about it? He is not asking about the Muslim community. He is not asking about whether what is the reality as per the books. He is asking your intent, your opinion. Can you hear me? शाहजी, कैन यू हियर मी? वो उनका माइक शायद डिस्कनेक्ट हो गया. या ही हैज हैविंग इंटरनेट डिफिकल्टी. प्लीज फॉर गॉड सेक्स कोई भी उनको पर्सनली अटैक ना करे. आई नो फ्रस्ट्रेशन हो रही है इधर. आई नो पीपल आर होल्डिंग बैक. प्लीज, आई कैन फील इट. जस्ट डोंट से एनीथिंग पर्सनल टू एनीबॉडी. नहीं, यू I आर. don't understand how, why it is so difficult to answer this simple question. श्योर आप श्योर. उस इंडिविजुअली आप इंडिविजुअल उनका ओपिनियन जानना चाह रहे हैं, आप ये नहीं मैं जानना चाह रहे. हमारे साथ दोबारा से आए हैं शाहजी साहब. आई थिंक डिफरेंट कनेक्शन के जरिए आपकी साइड पे इंटरनेट का इशू होगा, मे बी. राइट शाहजी, आर यू? Yeah, can you हेलो. guys hear me now? I Yeah, think I I'm can hear home you. now, so it should be easier now. Yeah, you आपका like I think internet connection is a little bit shaky over there today. Now, अपनी problem हुई. Okay. सही सही सही. ठीक ठीक. तो अभी आप जब चले गए थे तो इसी वही उस चीज पे हम लोगों ने वो किया था कि आप जो अ, मैं इस वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हुआ था कि आई वाज आस्किंग यू अ डायरेक्ट यस एंड नो क्वेश्चन, और आप उसका आंसर यस एंड नो में या एटलीस्ट डू यू एक्सेप्ट इट और नॉट के ऊपर देने के बजाय आप उसकी यार पता है क्या आपको प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है कम्युनिकेशन के अंदर? पता है क्या इशू आ रही है? यू ऑलवेज परसीव्ड दैट बुक फॉर अ डिफरेंट पर्पस देन but आई that's I don't care about the book how I हैव. perceive it. मेरा क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली है. Like, हाँ तो I don't मैंने know why आपको you're आपको going है on ना कि different tangents. देखें, My जब जब question is to आप इस you, तरह के बहुत सारे मैं Shaji, आपको as a एग्जांपल person. देता Do हूँ you ना. accept that that thing actually happened in history or not? That a यार person lived inside a fish? देखें मैंने आपको जिस तरह बता. I'm asking. I'm not asking about your ideas about this No thing no or. I'm not giving you my ideas. Let me देखें try जब one last time. I'm gonna जी ask जी you very specific question. Listen to the question. अगर आप इसका आंसर दे सको.
Do you, Shaji, believe a person lived inside a fish for 20 days and survived? Now, this is the question. Nothing about Furi Mine, nothing. This is the question. Can you answer this question? Of course I can. देखें जिस No, तरीके do से you believe or no? Do you believe or not? That's the I question. don't believe in anything. I have construct on reasons and logic to believe things. What do you एक mean you construct don't है believe in it? extra I'm कुछ नहीं asking, do बल्कि you तो believe a person यार lived inside a fish? आपको पता आपको है क्वेश्चन में क्या यार मुझे क्या हो गलती लग रही है? मुझे मैं समझ नहीं आ रहा। फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहे हैं आप बोलने क्यों नहीं मुझे देना चाहते नहीं, क्या it's मसला okay, Shaji. I don't want to continue the अच्छा conversation. मुझे मुझे 30 सेकंड देंगे आप Thank thank you very much for your conversation. हाँ I'm sure we had a good conversation. yeah of course Let's always break it try up for in a good thing, cordial manner. I don't want to disrespect you in any way, of and course I'm sure neither do you're I yeah, you're a and good you're friend I accept your the thing that maybe we are on two different pages when we are talking. So maybe it'll yeah be it's okay difficult. it Yeah, happens ना it's Neo. okay. It's okay. Different Maybe people that's not talk in a how different way मेरी understanding उस पे नहीं पहुंच रही, so I apologize. But यार let's मैं एक एक आखिरी चीज आपको चले, कह I'll सकता हूँ give you the last word and then I'll say इजाजत लेते हैं. ठीक No है problem. थैंक